टुडे वी गोना स्टार्ट कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट। हमने इससे पहले रियल इनर प्रोडक्ट के लिए डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिया है, सो यू शुड वॉच द प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट। नाउ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट? लेट V be a vector space over the field C, complex number, a mapping inner product of such that V cross V to complex number। डोमेन जो होगा वो V cross V आएगा एंड कोडोमेन इस complex number is called a complex inner product if it satisfies the following properties: inner product of alpha beta equals to inner product of beta alpha का whole bar for all alpha beta belongs to V। Now the second one is inner product of C alpha plus D beta comma gamma equals to C bar into inner product of alpha gamma plus D bar into inner product of beta gamma for all C comma D belongs to complex number and for all alpha beta gamma belongs to vector space। Now the third property is inner product of alpha is greater than 0 for all alpha belongs to vector space V with alpha not equals to theta। Find inner product of alpha comma C beta, that is equals to inner product of C beta comma alpha whole bar। by this property हमें क्या पता है? inner product of alpha beta equals to inner product of beta alpha का whole bar। so inner product of alpha comma C beta equals to C beta comma alpha का whole bar, that is equals to by the second property we can say that C bar का bar, C bar जो बाहर आएगा एंड उसका होल बार इंटू बीटा कोमा अल्फा का होल बार, दैट इज इक्वल्स टू सी बार का बार सी आएगा इंटू अल्फा बीटा बाय दिस प्रॉपर्टी। रिवर्स में ये प्रॉपर्टी आएगा। नाउ एडजॉइंट ऑपरेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, लेट V be an inner product space। V एक inner product space है ओवर ए फील्ड K, you can also take F, okay, and T V to V be a linear operator। Then the adjoint operator T star, we denote adjoint operator as T star, defined as, कैसे डिफाइंड होगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ टी यू कोमा भी इज इक्वल्स टू मैं इधर लिख रहा हूँ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा टी स्टार भी फॉर ऑल यू भी बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। ओके, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी यू कोमा भी इज इक्वल्स टू यू कोमा टी स्टार भी, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कोमा टी स्टार भी, जहाँ पर यू और भी वेक्टर स्पेस में से आएंगे। नाउ नोट, लेट ए बी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स। ओके, देयरफॉर ए आर एन टू आर be a
linear operator. Therefore इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू कॉमा भी क्या आएगा, ए यू का ट्रांसपोज इंटू भी, दैट इज इक्वल्स टू यू ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू भी, बिकॉज यू नो दैट मैट्रिक्स के लिए ए बी का जो होल ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है. सो दैट इज इक्वल्स टू यू ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू भी इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कॉमा ए ट्रांसपोज भी फॉर ऑल u v belongs to Rn. Therefore a transpose is the adjoint operator of A. अभी अगर A कोई n क्रॉस n का कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा, देन लेट A be an n cross n complex matrix. कॉम्प्लेक्स होगा तो A स्टार इक्वल्स टू A बार का होल ट्रांसपोज आएगा. इज द एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ A.